Assalamu alaikum to all of you, and hi to everyone. Uh, if you are preparing for NEET UG and you don't know how to proceed with your preparations, and then you don't need to worry because this is Malik Shahid Rashid, your fan educator, to help you with smart strategy how to crack this exam. Like I have been through this process, and I can tell you what are the secret tips that so that you can use to crack this exam. All right. Okay, before going into the discussion, I want to tell you, I want to give an answer to this question, that is it for everyone that I've mentioned here, is it for everyone? The answer is an absolute big yes. All right, an absolute big yes. It's for everyone, whether you are in 11th class or 12th class or preparing for the NEET UG that I said. Okay, now another thing is that what is this SRM rule? You can remember this rule with my name, Shahid Rashid Malik. All right, now what is this S? You need to understand, you have to make your concepts stronger. It's You have to make your concepts strong. All right, you have to make your concepts stronger. you know I'll not be going in depth. I mean, I will not make you understand the concepts very in a very depth way. Why? Because I would believe that you had made your concepts very stronger and very clear, all right, in your previous or earlier classes. All right, so I would believe, as I said. So one uh, who have made their concept stronger, who knows the concept behind the topics, behind the complex, especially behind the complex topics, who he or she can watch this lecture. All right. Now the second is this R. What is this R? R is you have to keep revising the things. It's revision. You have to keep revising the things. First, you have to study, make your concept stronger. Then you have to revise, keep revising the things. It's very important. Then this M is you have to develop MCQ solving techniques. All right, you have to develop by your own. Yes, of course. Here I am. I'll be sharing some techniques, some shortcuts, some short methods, so that you can get the answer correct and quickly. All right, but with the passage of time, you should develop a skill. All right, so that you can get the question answer of the questions very fast. Okay, so this was the two important things. Okay, now before I'll waste any more time of yours, I'll start the very first subject. I mean, the subject of fear that most of the students think like. Okay, so this is the one and only, the physics. Okay, now in physics, I'll be starting with the units and the dimensions. Why? Because I always believe that proper sequence makes you a proper, or it gives you a proper way. Okay, and it gives a proper strategy so that you cannot be in trouble in future. All right, so it's that's the reason that the proper ways have been made. Okay, now this units and dimensions, I'll in this first lecture, as is mentioned here, I'll be talking only about the part one of this units and dimensions. All right, now first I'll be starting with see before again starting, I want to say that I will not be focusing on all the topics, all the little topics, easy topics in the all chapters, I mean in upcoming chapters. I'll be talking only about the important ones. All right, which have been frequently asked in the questions, sorry, I mean in the exams. I'll only my focus will be only on those topics. All right, now the first thing is the rules of the dimensions. All right, rules of the dimensions, or simply the principle of the homogeneity. All right, now what is this rules of the dimension? You need to understand that you know a physical quantity can be added with the same physical quantity. All right, it can be. Now I'll be talking in Urdu language, because most of the students may not be able to understand. Okay, so I'll use the this Urdu language. All right,
देखो फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड करेंगे, तो तब ये एक मीनिंग देता है हमें, ठीक है ना? तब हम एक मीनिंग अचीव करते हैं। यही एक रूल है, एक फर्स्ट रूल है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द डायमेंशंस। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। नॉट ओनली द ऐड, बट वी कैन सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटी विद द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है। हम ऐसे बोलते हैं कभी कि 7 kg एप्पल को हम 7 kg ऑरेंज के साथ जब हम ऐड करेंगे, तब हम क्या बोल सकते हैं? इट गिव्स अस 14 kg एप्पल ऑरेंज। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स टोटली नॉट लाइक दैट। हम हमेशा बोलते हैं 7 kg एप्पल प्लस 7 kg एप्पल इज इक्वल टू 14 kg एप्पल्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि हमने एक सेम फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी सेम फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड किया है। ऑलराइट, तो इट्स लाइक दैट। एंड द सेकंड रूल इज दैट अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, तब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी अचीव कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ये रूल आपको पता ही है पहले से ही। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है ना, हमने दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया है, लाइक मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी को पाया। दैट्स फोर्स। और दैट्स फोर्स। मास आपको पता है, इट्स केजी। एक्सेलरेशन आपको पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड फोर्स इज न्यूटन। सो वी गेट द different physical quantity. All right, so you need to understand this thing. So these are the two rules of this dimension. It's very important, especially this is very, because all the questions of the dimensions I'll be solving with this rule. Like, एक physical quantity को same physical quantity के साथ add या subtract किया जा सकता है. Let's see the okay, I will use this. Okay, now let's see the first question. Find find the dimensions of A, B, C in this question. See, as I said कि क्या होता है कि हमें पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वीटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम ऐड तभी कर सकते हैं जब ये और ये सेम हो। इसका मतलब ये दो फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, तभी तभी तो उनको ऐड किया गया है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है, हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू सी। ऑलराइट, यहां पे भी आप देख सकते हैं, इस सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है। जब भी प्लस और माइनस का साइन हम देखेंगे ना, हमने ये चीज मानना है कि ये और ये फिजिकल, वो जो दो क्वांटिटीज के बीच में हम ऐड करते हैं, या प्लस साइन या सब माइनस साइन लगाते हैं वहां पे, तब जाकर हमें ये मानना है कि ये वो दो क्वांटिटीज, जिन दो क्वांटिटीज के बीच में ये साइंस है प्लस और माइनस का, वो क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज सेम क्वांटिटीज है। जैसे इन दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दो क्वांटिटीज सेम है, इसलिए मैंने इनको इक्वलाइज किया। ऑलराइट, तो सी, अब मैं हर एक क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खाली मैं इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो है ना, आपको शॉर्ट तरीके से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सो ये हम करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अब इन क्वेश्चंस में इक्वलाइज करेंगे ये quantities. All right, so now understand. Now A is equal to VT. We know that A is equal to VT. Now A के dimensions find out करना है ना हमें। तो हमें पता है, wait a second, हमें पता है A is equal to V के dimensions हमें पता है, LT minus 1. विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। आपको ना, आपसे रटवाऊंगा वो जितने भी सारी डायमेंशंस है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, उनके शॉर्ट ट्रिक्स। ए इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, और टी तो अपना ही है ना, T1. So when the bases or same powers are added, so LT is equal to 0. T raised power 0. So A के dimensions ये रहे। Similarly B के dimensions क्या, हम क्या हो सकते हैं B के dimensions? Alright, B के dimensions क्या, ये नहीं हो सकते? A divide by X. What is this A? L T0. X is L. So this is L1 L minus 1. This is L0. एंड सिमिलरली व्हाट इज दिस, सी के डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? x इज इक्वल टू सी के डायमेंशंस L1 हो सकते हैं। ये आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द
find the dimensions of the a and b. इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, हमेशा याद रखो कि जब भी लॉग साइन कोई भी एक्सपोनेंट आएगा ना, तब हमेशा ये जो होंगे ना, ये हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है। हमें पता है कि ये हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है। तो इसका मतलब जब भी मैं ये किस्म के क्वेश्चन देखूंगा ना, तो हमेशा मैं क्या करूंगा काम, मैं हमेशा इसको एक जो जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा ना, इसको मैं 1 मान के लेके चलूंगा। सी एज आई सेड, मैं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझाने अगर बैठूं तो इट विल टेक टाइम। तो इसलिए आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स दिस आर द शॉर्टकट्स। तो हमेशा यही चीज मान के चलेंगे हम, कि ये हमेशा हम इक्वलाइज करेंगे 1 के बराबर। जो भी ब्रैकेट में चीज होगी ना, जो भी इसको इसको फॉरगेट करेंगे। जो भी ब्रैकेट में चीज होगी ना, द थिंग दैट्स क्लोज्ड एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट, हम हमेशा उसको 1 मान के लेके चलेंगे। ऑलराइट। तो जैसे हमें फॉर एग्जांपल ए के तो पता ही है, एक ए के तो निकालने आएंगे। फॉर एग्जांपल ए को इस तरीके से जब हम इक्वलाइज करेंगे ना, तो ए के डायमेंशंस निकलेंगे, क्योंकि जो डायमेंशंस फोर्स के होंगे वही डायमेंशंस ए के होंगे। क्या क्या फोर्स के डायमेंशंस वी नो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं। वी नो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2। ये है ना फोर्स के डायमेंशंस। तो इसका मतलब ए के डायमेंशंस भी निकल गए। ऑलराइट। Alright. Now we have to find out the dimensions of the b. As I said कि इसको 1 के बराबर हम रखेंगे। bx is equal to 1. bx is equal to 1. Now x is equal to, sorry, b के निकाल लेना, b is equal to 1 by x. So it means l minus 1. So इस तरीके से करना है, शॉर्ट तरीके से इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है। Alright. Alright. Okay. Now another question, u is equal to a sin bt plus pi by c। ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो डायमेंशनलेस हो गया। ये पूरा क्या है, ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो मैंने फिर बोला इसको फॉरगेट करेंगे क्योंकि ये नंबर है, इसको छोड़ो। अब किसके निकालने, ए के निकालने। ए के तो आपको निकालने आएंगे, क्योंकि u इज इक्वल टू ए, इट्स एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट। पोटेंशियल एनर्जी के जो डायमेंशंस होंगे वही ए के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे। ओके। इसके बाद मैंने आपको बोला जो भी ब्रैकेट में होता है ना, उसको 1 के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वलाइज करेंगे 1 के साथ। तो इसका मतलब बी टी को मैं लिखूं 1 के बराबर, या सो नाउ b इज इक्वल टू 1 बाई टी। b इज इक्वल टू 1 बाई टी। नाउ b किसके बराबर, b के डायमेंशंस किसके बराबर आएंगे, t माइनस 1। क्योंकि t को मैंने ऊपर किया ना, इसलिए t माइनस 1। इतना बेसिक्स तो आई वुड बिलीव कि इतना इतना बेसिक्स आपको आना चाहिए। ऑलराइट। So these are the first things that you can do to solve the questions. Okay, now the dimensions of like a and b again. See, this is a refractive index. Mu is refractive index. We know it's again a dimensionless quantity. All right. Now we have to find the dimensions of a and b. Now you can do like this. Mu is equal to a is equal to b divided by lambda cube. Lambda is the wavelength. We know. All right. Now again, this a is equal to dimensionless. Why? Because mu is dimensionless. Mu is dimensionless. Now we know mu is also equal to b by lambda cube. We know that this is dimensionless, so that I can put its value 1. Yeah, I can put its value 1. So b by lambda cube. So lambda आएगा यहाँ पे, आएगा कि नहीं? So b is equal to lambda cube. Lambda we know that it's a wavelength, or it's simply it has got the units like units of length. It's a distance. We know it's a distance between the you know uh, uh, like okay. Now this wavelength is equal to shabash L3. So we get the dimensions of what, B. Okay. Wavelength, it's a distance between what? It's the distance between the troughs and crests. All right. All right. Now the two graphs that I'll be talking about, that one is this graph that's important. Between this numerical value and the unit. We know that numerical and unit, there's a relation, inverse relation is there. More the numerical value, less is the unit. It's like this. It has got the inverse relationship, right? It has got the inverse. And second is this graph between nu and u. This graph is constant. This is the constant graph that it is. It's very important because this question has been asked. All right. Now we have got this another question here. In new system of unit,
unit of length is x meter, then find the value of 8 meter cube volume in new system of unit. You need to always remember this formula: n1 u1 is equal to n2 u2. See, this is one system, this is for one system, this is for one system, this is for another system, this is for another system. Understand, this for one system and this for another system. See, in new system of unit of length is x. हम इसको नया सिस्टम मान के लेके चलेंगे, ठीक है ना? ये क्योंकि ये एक सिस्टम के लिए है ना, ये दूसरे सिस्टम के लिए है, तो अलग अलग सिस्टम, फॉर एग्जांपल इसको हम नए सिस्टम के लिए मान के लेके चलेंगे, ठीक है ना? So in new system of unit of length is x meter, unit of length is x meter, so it's unit that's given in the new system. Okay, then find the value of 8 meter cube volume in new system of unit. हमें 8 meter cube जो एक पुराने सिस्टम में जो हमारे पास ये वॉल्यूम गिवन है, 8 is the numerical value and unit is what, meter cube. एक पुराना सिस्टम और नए सिस्टम में इसका जो है जो हमें जो है n2 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. ऑलराइट, सो n2 तो फाइंड करना है ना, तो x मीटर का होल क्यूब. ऑलराइट, नाउ this like this is 8 meter cube n2 x cube meter cube. Now meter cube will get cancelled. Alright, will get cancelled out. Now this n2 is equal to 8 divided by x cube. So you know, this is the answer of this question. All right, you have to do these questions like this. There are now, you know, lots of questions like this. You can apply this shortcut to solve the question. All right, now we have this temperature gradient and velocity gradient. Always remember, whenever we will talk about the gradient, will always be like we have to that quantity must be divided with the length, I mean, or distance. For example, like temperature gradient, so temperature gradient is equal to temperature divided by gradient or distance or length. So its temperature is Kelvin, or is L minus 1. So KL minus 1 is the, you know, dimensions of the what, temperature gradient. Simply, it's very simple. All right, now similarly, a velocity gradient is again equal to velocity divided by length. All right, velocity, the formula of velocity is lt minus 1 and this is l1. So l minus 1, then it will, you know, ये ऊपर आएगा ना, तब जाके simply बचेगा t minus 1. So which is the dimension of frequency as well. T minus 1, we know 1 by t is also the dimensions of the frequency. So that's why we will say that from now velocity gradient and frequency, they have got the same dimensions. They have got the same dimensions. You need to understand this thing. And also there are some 3 questions which I have mentioned here. Charge density. We know the charge density is equal to charge simply divided by volume. All right, now charge, we know charge is equal to it. All right, I के dimensions क्या होते हैं, ampere, and t is t, and volume L3. So it's simply A1 T1 L minus 3. All right, so this is the charge density. Linear charge density is charge divided by length. So this is A1 T1 L minus 1. Now this is areal charge density. Areal charge density is simply charge by area. So A1 T1 L minus 2, क्योंकि एरिया का होगा ना L2, वो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना, वो फिर बनेगा क्या, L minus 2. You need to understand, these are the basic things here. Okay, now physical quantities that have the same dimensions, that have got the same dimensions, उसका शॉर्टकट एक ही देखो. अब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करके डायमेंशंस उतना टाइम नहीं होता है बार बार, ठीक है ना. आपको अब चीजें कुछ, यू हैव टू रॉटिफाई द थिंग्स सो दैट यू कैन गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वेरी वेरी क्विकली एंड फास्टर. ऑलराइट, डिस्टेंस, you need to understand distance, displacement, radius of gyration, parsec, astronomical unit, light year, wavelength. They have got the same, dimension, that's L1. It's very simple. And then second is speed हो या velocity हो या change in velocity हो या average velocity हो या terminal velocity हो,
टर्मिनल वेलोसिटी हो या ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, इनके डायमेंशन सेम होते हैं, दैट्स एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन. All right. And now acceleration हो, average acceleration हो, centripetal or simply centripetal acceleration हो, centripetal acceleration due to gravity, acceleration due to gravity ho, acceleration due to gravity. And important thing here is the intensity of gravitational field ho, inten all have got the same dimensions, that's lt minus 2, lt minus 2. This is very important that highlight I'm going to highlight. This is very important. Intensity of what? Gravitational field. All have got the same dimension, that's lt2 minus, sorry, lt minus 2. Okay. Okay. Now impulse. Okay. Impulse हो, change in momentum हो, or simply momentum हो या linear momentum हो, all right, they have got the same dimensions, that is m1 l1 t minus 1. एंड आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखें जो कि इसके साथ थोड़ा बहुत रिजेंबल होती है, नोट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस, वो क्या क्या है, सेम m1 l1 t minus 1, बट यहाँ पे आपको माइनस साइन पुट करना है, बाकी सेम है. दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. So like we have talked about these some important formulas. Okay, now if I'll talk about the force, any kind of force, like force, weight ho, gravitational force ho, electric force ho, magnetic force ho, normal reaction ho, all right, friction ho, कोई भी फोर्स हो, किसी भी किस्म का फोर्स हो, टेंशन हो, ऑलराइट, तो फोर्स के लिए सेम है m1l-1t-2. so this is what the dimensional formula for any kind of force. Okay, this is also very important. And energy, like surface tension or energy or constant force constant or spring constant. Okay, they have got the same, that's mt minus 2, mt minus 2. Okay, you need to understand energy density हो या इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, हाफ ऑफ e naught square like divided by mu, all right, and v square divided by 2 mu naught. इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बेसिकली व्हेन यू विल आपने 12th में पढ़ा होगा, एनर्जी डेंसिटी की ये फॉर्मूला होती है, तो इस इस तरीके से भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना. एनर्जी डेंसिटी हो, एनर्जी डेंसिटी like Young's modulus, bulk modulus, shear modulus, half of stress into strain. ये as it is आते हैं ये questions, half of stress into strain, pressure, stress, इनकी सेम फॉर्मूला है, क्या है, प्रेशर. आप सिंपली प्रेशर की फॉर्मूला इस तरीके से भी निकाल सकते हो, जब आपको आई एम टेलिंग यू, जब आपको प्रेशर की फॉर्मूला पता होगी ना, तब जाके आप इन सारे जो जितने भी यहाँ पे फॉर्मूला है ना, इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. जैसे आप एक चीज एक फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, क्या आपको प्रेशर का निकालना आएगा, जब आपको प्रेशर का निकालना आएगा तो इसका मतलब आपने इनका भी निकाला ना इनडायरेक्टली. तो जब प्रेशर का निकालोगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि आप उस टाइम पे आराम से प्रेशर का निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स का आपको पता है, एरिया का भी आपको पता है, तो प्रेशर का आपको पता होगा, विच मीन्स दैट वही सेम होगा किसके लिए भी, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस के लिए भी, बल्क मॉडुलस के लिए भी, शेयर मॉडुलस के लिए भी, एनर्जी डेंसिटी के लिए भी, और इसके लिए भी और इसके लिए. ऑलराइट, सो इस तरीके से करना होता है, ठीक है ना. सो ओके, नाउ permittivity, all right, permittivity. Now permittivity, how can you find out the dimensional formula of the permittivity. We know that force is equal to kq q1 q2 by r square, we know that coulomb's law. Okay, k is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught q1
q2 by r square. So this epsilon, this is permittivity. Now you can easily, how this, we know that it is the dimensionless, it's dimensionless, so it's 1 by epsilon naught q square r square. Now you can, epsilon naught is equal to, okay, q square f r square. Now you can, find out the dimensional formula of this permittivity like this. Okay, now again, magnetic field and magnetic flux. Field, we know that force is equal to qvb. B is what? Magnetic field. Force, dimensions of the force, dimensions of the charge, dimensions of the velocity, you can easily calculate or find out the dimensional formula of the B. Then magnetic flux. Magnetic flux is, you know, uh, magnetic flux is equal to B dot A. When you get the dimensional formula of the B, or I mean the magnetic field, you can easily calculate or find out the, dimensions of the magnetic flux. Okay, A is the area, like L2, and B you can get this, with this formula. All right. Now, very important, very much important. This is very important. I'm going to highlight this. This is very important. This thermal conductivity and electric field or the potential gradient. Mostly thermal conductivity. You know, thermal conductivity, the dimensional formula of thermal conductivity is MLTK, or sometimes theta. M, you have to remember. How can you remember this formula? You have to remember 1133. Okay, 1133, and put negative signs at, for the last two digits. Okay, so it's, sorry, it's 1 1 minus 3 minus 3. So I have to remember this formula like this. Okay, and its unit, if I'll talk about its unit, if I'll talk about its unit is, unit for thermal conductivity is Kelvin. Unit for thermal conductivity is uh, Kelvin. uh, Okay, I'll be sharing this, the unit of the thermal conductivity in few seconds. Wait a second. Okay, now electric field. Now electric field or the potential gradient, electric field or uh okay, yeah. I just remember now, Kelvin per meter second. This is the like unit of what you call is this thermal conductivity. Kelvin per meter second. Kelvin per meter second. Okay, now electric field or the potential gradient. Electric field, that the form or the potential gradient, it's same, but or you can use this formula, like if we know the electric field is equal to force by Q. They have got the same dimensions, electric field and the potential gradient. You can use this formula to get the answer. All right. Dimensionless physical quantity. Dimension less physical quantity, like we have this solid angle, we have the, you know like, simply we have angle. All right, and angular displacement, strain we have. So these are all dimensionless physical quantities. These are all dimensionless physical, or simply Poisson's ratio, also refractive index, and all sine exponents, trigonometric ratios. These are all the dimensionless what physical quantities. Okay, now there are some important, some important points. Okay, some important points. Okay, a physical quantity does not have dimension, then that physical quantity must be unitless. No, it's wrong. It's wrong. Why? Because see, it's saying again, look at the question. A physical quantity does not have dimension, then that physical quantity must be. No, it's, see, for example, we have the plane angle. Plane angle. Plane angle is dimensionless. Plane angle is dimensionless, but it still have unit. Like radian. It have unit like radian. So it's wrong. So it's wrong. A physical quantity have unit, then may have dimension. Yes, it's true. It's true. A physical quantity have unit, may have dimension. Yeah, of course, it's also true. It's also true. Yeah. Okay. Physical quantity does not have unit, must be dimensionless. Yeah, it's also true. It's also true. Physical quantity does not have dimensions, may or may not have unit. Yeah, it's also true. Physical quantity have dimension, must have unit. Yeah, it's also true. So these are the important points.
they can be asked in air questions. Now again, dimensions of alpha, beta, and gamma. You can equalize like this: alpha t is equal to beta x is equal to gamma x t. You just have to forget about these signs, and you have to just equalize, and you can get the answer. If A and B have different physical, or sorry, are different physical quantities, then which is correct? ओके, डिफरेंट, अगर ये दो डिफरेंट है, अगर ये दो डिफरेंट, तब जाके हमें पता है या तो मल्टीप्लाई, या तो ये क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, या तो ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, या तो ये क्या डिवीजन में होना चाहिए, होने चाहिए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब जब भी कोई क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में होगी या डिवीजन में होगी, तब जाके वो क्या होते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सो आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस। Now again, we have to find out the dimensions of P. We have to find out the dimension. Just forget, you know, this everything. Now, like, yeah, we can just equalize P is equal to P naught, but P naught given नहीं है यहाँ पे, और इस तरीके से जो है हम इक्वलाइज कर सकते हैं टी क्यूब। नाउ इसको हमें फॉरगेट करना है, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट जो होते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फिर मैंने आपको बोला जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, जो उस ब्रैकेट में होगा या एक्सपोनेंट पे जो भी होगा, जो भी एक्सपोनेंट इसके पावर में होगा, उसको इक्वलाइज करेंगे 1 के साथ। इस माइनस को भी फॉरगेट करेंगे, तो अल्फा टी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे डायमेंशंस पी के नहीं निकालने हैं। वेट, यहाँ पे डायमेंशंस, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि डायमेंशंस निकालने, हमें डायमेंशंस यहाँ पे चाहिए कि किसके निकालें, अल्फा के निकालें। ओके, सो अल्फा टी क्यूब इज इक्वल टू 1। सो अल्फा 1 by t cube, so it's t minus 3. So we get the answer. Electromotive force. We know electromotive force is equal to work done by what? Charge. So you can easily, work done is what? You need to also remember this point, that energy, work done, they have got the same, same dimensional formula. And similarly, torque, I will mention this here. Torque, torque. What is the formula of the torque? Torque, force into what? The perpendicular distance. You can get the dimensional formula of the torque. All right. And work done, I was telling you, work done and energy, they have got the same formula, same dimensional formula. And pressure and Planck's constant, they have also got the same dimensional formula. You need to understand this. And then there's this Wien's constant, P. You need to remember this formula, as it is. That's K1L1. You can remember this formula with KL Rahul. All right, K1L1. Okay, shake, it's for what? Time. Shake is the unit for time. Parsec is unit for what? Distance or length. All right. Now there's this question: number of particles crossing per unit area perpendicular to z-axis per unit time is given by this. Like, this is given: n is equal to minus t n2 minus n1 divided by z2 minus z1, where n2 and n1 are the number of particles per unit volume at z2 and z1 respectively. What is the dimensional formula for d? See, the question is saying that, in the question, some things are mentioned, like number of particles crossing per unit area perpendicular to z-axis per unit time is given. Like, n is given. So n is given, that in question, number of particles crossing per unit area, it means crossing per unit area is a to z-axis per unit time, per unit what? Time, is given by this n. Okay, so we get the n. So L2, this is T1, so it's L2 T minus 1. So we get the n. Okay, now, where n2 and n1 are the number of particles per unit volume at, so now we again, the rules of dimension or principle of homogeneity, ये क्या हम नहीं, इसके इन दो के बदले में एक ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी। कैसे हमें पता चला कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी? बाय दिस साइन, माइनस साइन। क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है ना, इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो इन दो के बदले में एक ही लिख सकता हूँ ना। सो जैसे n1 इज इक्वल टू n2 में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे पता चला? क्योंकि इस माइनस साइन से पता चला मुझे, बिकॉज एज पर द रूल ऑफ होमोजेनिटी और द डायमेंशंस। ऑलराइट, सो n1 इज इक्वल टू n2, क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट व्हाट? वॉल्यूम एट, so it's
per unit volume. So it's, L minus 3. It's what? L minus 3. And add Z2 and Z1 respectively. Z1 is equal to Z2 is equal to L1. Now we can, what is the dimensional formula for what? D. How can we, find the dimensional formula of D? Like it's now N is equal to D N2 divided by Z2. How we, how can you write this? Basically we have got this formula, so we have write this. We know that this N2 and N1, these are the one and same thing. This is one and the same thing. Z2 and Z1 is one and the same thing. Okay, so that's the reason I also, I only write N2 and Z2. Okay, now you can calculate, you can get the what formula of dimensional formula of D. Okay, now shortcuts for significant figures. What are the shortcuts for the significant figures? First, you, for the addition and subtraction, डेसिमल के बाद आप देखो, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद ना, डेसिमल के बाद आप देखो कि जिसके जिस जिस डेसिमल के बाद जिसके सबसे कम नंबर आते हैं ना, जिसके कम डिजिट्स और नंबर्स हैं, आंसर में भी हम वही लिखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ 1.5 प्लस 1.51. डेसिमल के बाद किसके मिनिमम डिजिट्स हैं? इसके, क्योंकि इसके एक ही है ना डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर, और डिजिट्स और नंबर इसके दो हैं. तो आंसर में क्या होगा? जब फॉर एग्जांपल इसका आंसर हम लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल 1.51 और 1.5, ये क्या है? 1 एंड दिस इज 5.5, दिस इज 10, दिस इज 3, ये आएगा यहाँ पे पॉइंट. तो आंसर में 3.01 आया ना. तो बट हमें पता है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे हम किस तरीके से हम लिखेंगे, क्योंकि हमें इससे मिनिमम सिग्निफिकेंट इसमें लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसके डेसिमल जिस जिस डेसिमल के बाद जिसके कम नंबर होंगे ना, आंसर में भी हम वही लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे हम डेसिमल के बाद भी एक ही डिजिट लिखेंगे, तो आंसर आएगा 3.0. So 3.0 is the correct answer, right? And again, for multiplication and division हम ओवरऑल देखेंगे. For example 3.5 divided by 3.5. तो ओवरऑल कितने हैं? दो है ना, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है. तो आंसर में क्या हो, जब आंसर हम लिखेंगे ना, तो इसका आंसर 1 आएगा, बट नहीं, आंसर 1 नहीं, 1.0 आएगा. क्योंकि ये क्या है, इसमें कितने ये हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स, दो सिग्निफिकेंट्स, इसमें भी कितने आने चाहिए? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इस तरीके से जो है ना, ये शॉर्टकट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं इन क्वेश्चंस, इन जैसे क्वेश्चंस के लिए. तो ये क्वेश्चन है जो 2020 में आया था 9. जब हम इसको जो है ना, this should be point, it's not dash, this point 9.99 मीटर को जब हम इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब ये सब्ट्रैक्शन का केस आ गया ना, तो वही अप्लाई शॉर्टकट करेंगे. तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? आंसर में हम वही लिखेंगे जो पहले, तो हम डेसिमल के बाद, क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस आ गया, तो डेसिमल के बाद किसके कम डिजिट्स हैं? इसके 1 2 हैं, इसके 1 2 3 4 है कि नहीं है? तो डिजिट्स में बोल रहा हूँ, 1 2, इसके कितने? 1 2 3 4, तो इसके दो है. तो आंसर में भी क्या होना चाहिए? आंसर में भी दो डिजिट्स ही होने चाहिए आफ्टर डेसिमल. सो आफ्टर डेसिमल इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 है. इसमें आफ्टर डेसिमल कितने? 1 2 3 है. इसमें आफ्टर डेसिमल कितने हैं? 2 है. इसमें आफ्टर डेसिमल कितने हैं? तो हमारा जो आंसर जो है यहाँ पे बनेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2. क्योंकि क्वेश्चन में जो ये है, क्योंकि हमें मिनिमम लिखने हैं ना, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर्स के टर्म्स में हमें लिखना है. तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. So the last topic in this is vernier caliper. वर्नियर कैलिपर की कुछ फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर करना है. दैट्स लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD. यू नीड टू अंडरस्टैंड लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD. और लीस्ट काउंट की और एक फॉर्मूला है, दैट्स MSD माइनस 1 माइनस M बाई N. ये और एक फॉर्मूला है, ये और एक फॉर्मूला है जो कि आपको क्या रिमेंबर करना है. व्हाट इज दिस M? दिस इज नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल. N is the number of divisions on what? Vernier scale. Okay, and this is the reading of what? Vernier caliper. This reading is equal to MSR, main scale reading, plus least count into vernier scale reading minus zero error. This is what? This is zero error. Okay, now look at the questions. Look at the questions. Each division on main scale is 1 millimeter. Which of the following vernier scales give vernier constant equal to 0.01 millimeter? And these are the options. इन questions को आप कैसे solve करेंगे?
देखो शॉर्टकट है, पहले तो ये है कि ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल जो है ना, जब ये लाइन आएगी ना, ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल, ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल का मतलब होता है एमएसडी। तो एमएसडी गिवन है 1 मिलीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर स्केल विल गिव वर्नियर, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है 0.01। तो क्या हम नहीं निकाल सकते इससे वीएसडी, क्योंकि हमें पता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एमएसडी माइनस वीएसडी। यहाँ अभी मैंने लिखा है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एमएसडी माइनस वीएसडी, तो यहाँ से इस फॉर्मूला से क्या नहीं निकाल सकता है क्या वीएसडी। तो वीएसडी जब हम निकालेंगे 1 यू नो इस 1 - 0.01, पहले तो इसको इस मीटर को ना हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिलीमीटर में उसको हम लाएंगे, ठीक है ना। सो आप देख रहे हैं ये क्या आएगा। तो वीएसडी का फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम यहाँ पे अचीव करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमने अचीव किया फॉर एग्जांपल वीएसडी का ये वैल्यू लाइक 1 पॉइंट समथिंग, ऑलराइट। ओके, लेट सपोज हमने अचीव किया फॉर एग्जांपल लाइक 0 पॉइंट समथिंग, ओके 0 पॉइंट समथिंग हमने अचीव किया, ओके। तो अब देखो, देखो वीएसडी हमने अचीव किया। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे आप ऑप्शंस को ऐसे करो, वीएसडी इज इक्वल टू एम बाई एन। एम क्या है, एम क्या है लेंथ, लेंथ ये पुट करो, ठीक है ना, डिवाइड बाई एन क्या है डिविजन्स, फॉर एग्जांपल एन डिवाइड बाई 10। अब आपको ये देखना है कि वीएसडी हमारे पास ऑलरेडी आया इस फॉर्मूला से, आई मीन इस जो ये गिवन है इस डेटा से, ठीक है ना, वीएसडी से। फिर वीएसडी अलग इन ऑप्शंस का निकालो, फिर कंपेयर करो जिसका सेम आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल अब जिस ऑप्शन में वीएसडी फॉर एग्जांपल वही आएगा जो हमने इस डेटा के थ्रू से निकाला, वही हमारा आंसर होगा। वो हम कैसे निकालेंगे इन ऑप्शंस में, वीएसडी इज इक्वल टू एम बाई एन। एम बाई एन, एम आपको पता है ये लेंथ से, ये लेंथ हम पुट करेंगे, एन क्या है डिवीजन से। हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग तरीके से हम देखेंगे, अलग अलग देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। अगर इन ऑप्शंस में वीएसडी का वैल्यू सेम आता है इस वीएसडी से, तब जाके वो हमारा आंसर होगा। और ये करके हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ये है सी। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। Okay, okay. So now another question. It's very also a famous question. If nth division of main scale coincide with the n plus bth division on vernier scale, then V vernier constant is equal to, and a given a value of one main scale is a. Okay. Now question is saying if nth division of main scale, it means nmsd is equal to coincide with n plus bth ऑन वर्नियर स्केल मींस वीएसडी। सो यहाँ से हम वीएसडी निकालेंगे, ठीक है ना। तो वीएसडी किसके बराबर आएगा, सो वीएसडी आएगा बराबर एन एम एस डी डिवाइड बाय एन प्लस बी डिवाइड बाय एन प्लस बी। सो नाउ वी नो दैट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एमएसडी माइनस वीएसडी। yeah, so now msd we will write it as it is, okay, minus vsd के बदले n divided by n plus b into msd. Now msd के बदले we know one value of one main scale is a, so main scale division is given, that's we will put in place of msd a minus n divided by n plus b into a. Now cross multiple, oh okay, we will पहले हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। अगर कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना, ऐसे भी हम कर सकते हैं a इज इक्वल टू ए, अगर हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, आएगा 1 - n divided by n plus b, okay, all right। So now finally a is equal to n plus b minus n divided by n plus b, n से n गया, all right, so it's ab divided by n plus b। So this is the answer, this is the final answer we get, for this question, okay। Now, the last is screw gauge. Screw gauge, we have also we have also some formulas like least count is equal to pitch divided by n. N is what? Number of divisions on what? Circular scale. Okay, least count. Okay, and this is reading MSR plus least count into CSR circular scale reading and minus zero error. Okay, screw gauge. Okay, you need to understand. Now the least count question is the least count of main scale of a screw gauge is what? You need to understand this least count of main scale of a screw. Whenever you will see this line, the least count of main scale of a screw gauge is 1 millimeter. It's pitch. You always remember that it's pitch that's given. Okay.
1 millimeter. Okay, it's 1 millimeter. The minimum number of divisions on its scale required to measure 5 micrometer diameter. So 5 micrometer diameter is what? Its least count. 5 micrometer, 5 into 10 to the power minus 6 meter. Now you can again convert this meter in what? Millimeter. Okay, then you can easily calculate what number of divisions. How we know that? Recently I wrote that least count is equal to pitch divided by what? Number of divisions. Pitch is given, number of, sorry, least count is given. You can easily calculate what number of divisions. Okay, another question. As the spherometer has 25 equal divisions marked along the periphery of its disk, and on full rotation of disk advances by 0.0625 centimeter on main scale. What's the least count of spherometer? So least count we have to find out. Now divisions is given, n is given 250, and this is what? Full rotation of disk advances, and on full rotation of disk advances by what? This is pitch is given, so you can easily calculate what? Least count. Okay, number of divisions on circular scale is 100, and number of full rotations given to screw is 8, and distance moved by screw is 4 millimeter. Now here is the twist. See, the division is given, n is given. Okay, now you can see that full rotations given to screw is 8 and distance moved. See, it's like rotations per displacement, I mean 4 millimeter. It means like it's like this. So it's pitch is what? It's like displacement, how much displacement, and the full and one rotation, I mean the full rotation, sorry, that's it. Okay, this is 1 by 2 millimeter. So pitch we got 1 by 2 millimeter. Then what will be the least count? Okay, now we know that divisions, how much 100. Okay, now least count we can easily calculate this. 1 by 2 divided by 100. We can easily calculate least count. Now the permeability of what? Free space. Permeability of free space, you need to understand MLTA, and you have to just 1 1 2 2 and put last two digits negative sign. Okay, it's like that. And again self inductance MLTA, and this is one, same, but put here 2, again -2 -2. So here this is 1, this is 2, rest is the same. Rest is the same story. Okay, RC, it's like T minus 1. Its dimension is got like T minus 1. Dimensional formula of this van der Waals like constant A, B, but here dimensional formula of A is frequently asked question. So you have to understand like it's a dimensional formula. You can obviously you can solve, you can do this question, but at the end you have to like you don't have that much time, so you can remember, you can mug up this formula for A. It's M1L5 T minus 2. M1L5 T minus 2. It's very important. I will put again an important, like I will highlight this. It's again important. Universal gravitational constant, like it's MLT. This is like -1 -2 and this is 3. You have to remember like this. Okay, this is again important. This is again important. This is again important. G by R, root of G by R represents what? This represents angular speed. This represents what? Angular speed. See, screw gauge following readings to measure diameter of wire. Like main scale reading is given, circular scale reading is given. 1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions on circular scale. It's what? Pitch that's given. It's pitch that's given. The diameter of the wire is. We have to calculate what? Least count. Pitch is given. Pitch is given what? Like 1 millimeter. Okay. Like pitch is given. The pitch, we know that like pitch is how much this is given. 1 millimeter on main scale corresponds to what? 100 divisions on what? Circular scale. The diameter of the like wire is pitch is 1 divided by 100. Okay, this is pitch. Now like now what is the formula for this? Like we have to calculate the reading. Okay, sorry, this is the least count that's given.
1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale. This is this page. Now you can easily calculate about reading. How? Main scale reading plus least count into vernier scale reading minus zero error. Okay, minus zero error. Minus zero error. MSR is 0. This is least count is what? 1 by 100 into VSR. Sorry, this is CSR, circular scale reading, into 52. Now you can easily get the answer. Basically, I got confused. It's like 1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions. So it's like, yeah, it's what? It's simply least count that's given. 1 divided by 100. Here you can get the least count, and then accordingly you can calculate what the reading. That will be the diameter of what? Wire. That will be the diameter of what? Wire. Again, there is another question. Solid angle subtended by intercepted area of 1 centimeter square of spherical surface about center of radius 5 centimeter will be. See, solid angle, the formula for solid angle is like A by R square. A by R square. Okay. A by R square. So its area is 1 and R square 525. So radian. Okay. So now the limitation of limitation of what? Limitation of dimension analysis is very important for what? AR questions. Okay, limitation of dimension analysis. Now you can just, like, it can derive dimensionless function. It can't derive like dimensionless function. It can't derive if given quantity depends on two same quantities. It can't derive if function depends on trigonometric ratios, log, exponents. It works only up to three quantities. So these four important points, these are very important. Okay. Now, rules for significant figures. Rules for significant figures. What are the rules for significant figures? You need to understand. All non-zeros, all non-zeros are what? Significant figures. All zeros are what? All zeros are insignificant figures. They are not significant. Okay. All non-zeros, all non-zeros, all non-zeros between, sorry, all zeros between non-zeros, all zeros between non-zeros are what? Significant figures. See, all non-zeros are what? Significant figures. It's common sense. All zeros are what? Insignificant. It means they are not significant figures. But all zeros which are in between the non-zeros, like for example 2, 0, 3, 4, this time this zero is between what? The non-zeros. So it will be again counted as significant figures. So there are four significant figures. There are four significant figures. Okay. And like, also, ending zeros or trailing zeros or what? Terminal zeros, but they should be present after the decimal. After the what? Decimal. They should be present after the decimal, for example. Then they will be considered, they'll be counted as significant figures. Like for example 3.00. See, first the two conditions should be satisfied. First, they should be present after the decimal, and they should be present at, they should be at, at the ending positions. So here four significant figures. So why? Because both conditions are satisfied. For example, if I'll give you an example like this: 2300. So only two significant figures are here. Why? Because, and at the end, ending position, there are these zeros are there, but they are not present after the decimal. They're not present after the decimal. So the two conditions should be satisfied after the decimal, and there should be ending zeros. Okay. So at last, I want to say, keep studying. Okay, keep studying, stay consistent, and thank you so much for your cooperation. And I hope it will be helping you in future. Okay. So thank you so much once again. Bye bye, take care, Allah Hafiz.